That is the venue, Lucknow-Agra expressway, where as many as 17 of the Indian Air Force aircrafts, including AN-32 transport, Mirage 2000 and Sukhoi 30, will do touchdown exercise. And our correspondent Vikas is present. Vikas, we can see a jet approaching. Give us the updates of what's going on at the venue. जी बिल्कुल अद्भुत नज़ारा अभी आपने देखा। मिराज किस तरीके से हवाई पट्टी को छूता हुआ निकल गया। ऐतिहासिक दृश्य जिसको देखने के लिए सुबह से ही लोग बेकरार थे। आखिर वो क्षण आया और इसके बाद लगातार भारतीय वायुसेना के विमान इस हवाई पट्टी पर उतरते रहेंगे। आज लोगों में सुबह से ही और कई दिनों से इस चीज़ की उत्सुकता थी कि किस तरीके से इस इमरजेंसी लैंडिंग के इस रिहर्सल को देखा जाए। और फिर सामने से मिराज आता हुआ वायुसेना का आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। Right, Vikas, if you can give us some details of the exercise that is going on. We can see that these jets are not landing. They're coming very close to the runway and taking off again. So touch and go. If you can give us some detail about this exercise. जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं एक के बाद एक भारतीय वायुसेना के विमान इस हवाई पट्टी पर उतरते हुए। ऐतिहासिक क्षण है। आगरा एक्सप्रेसवे पर फिर से एक मिराज आता हुआ आप देख सकते हैं। वो सीधी तस्वीरें फिर से हवाई पट्टी की ओर और वो लोग बेकरार हैं इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए। भारतीय वायुसेना का ये लड़ाकू विमान मिराज किस तरीके से आ रहा है। अद्भुत क्षण, अद्भुत अलौकिक देख सकते हैं। शानदार तस्वीरें भारतीय वायुसेना के लिए जिसको देखने के लिए सुबह से ही लोग बेकरार थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय वायुसेना के लिए। विशेष परिस्थितियों में ऐसी ही हवाई पट्टियों का प्रयोग किया जाता है जब कभी वार की स्थिति होती है, कभी डिजास्टर की ज़रूरत होती है। ऐसे मौक़ों पर ये हवाई पट्टी है और ये आगरा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी है। इसकी एक खासियत है कि ये चाइना और पाकिस्तान दोनों बॉर्डरों से मिसाइल रेंज की मार से बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ तक उनकी मिसाइल रेंज नहीं आती है। तो ये क्षण, ये हवाई पट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है भारतीय वायुसेना के लिए। और आपको बताना चाहेंगे कि इस यहाँ पर लगभग 15 लड़ाकू विमान उतारे जाएंगे, 2 ट्रांसपोर्ट विमान उतारे जाएंगे। किस तरीके से आपने अभी देखा जो लड़ाकू विमान भारतीय सेना के मिराज उतारे गए थे, इसके बाद जगुआर और सुखोई आएंगे यहाँ पे। अभी आपको लगातार दिखा रहे हैं वो सीधी तस्वीरें। एक के बाद एक कर भारतीय वायुसेना के विमान गरजते हुए, हवा का सीना चीरते हुए इस मैदान, इस हवाई पट्टी पर उतर रहे हैं। अद्भुत अलौकिक दृश्य आप सीधे देख सकते हैं। एक बार फिर से जगुआर मिराज उतर रहा है। ये मिराज देखिए, मिराज भारतीय वायुसेना की ताकत देखिए। छूते हुए गया जी, बिल्कुल छूते हुए हवाई पट्टी को गया। अद्भुत दृश्य, अलौकिक दृश्य। इसी दृश्य को देखने के लिए लोग सुबह से ही बेकरार थे। अद्भुत नज़ारा। ऐसे विशेष मौके कभी कभी आते हैं और ऐसा मौका जिस तरीके से तैयार किया जा रहा है इस हवाई पट्टी को, ऐसे ही अभी आगे का टारगेट है। इससे पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारे गए थे। इसके बाद ये आगरा एक्सप्रेसवे और इसके बाद लक्ष्य है कि लखनऊ से बलिया जो एक्सप्रेसवे आगे बन के तैयार होगा, उस पर भी भारतीय वायुसेना अपने विमानों को उतार सकती है। हालांकि भारतीय वायुसेना गोरखपुर एयरपोर्ट और वाराणसी एयरपोर्ट पर भी अपने लड़ाकू विमानों को उतार सकती है। और एक बार फिर से वही दृश्य, शानदार दृश्य देखिए। भारतीय वायुसेना का विमान मिराज हवा का सीना चीरते हुए, हवाई पट्टी को छूते हुए सीधा एक बार फिर से आसमान की ओर उड़ गया। अद्भुत दृश्य, अद्भुत नज़ारा, अलौकिक दृश्य। जी जी बिल्कुल
और इन हवाई पट्टियों के आसपास की अगर बात करें तो काफ़ी खास, महत्वपूर्ण, काफ़ी सुरक्षित है। काफ़ी दिन पहले से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम कर दिए गए थे। 4 दिनों से इसे बंद कर दिया गया था आम लोगों की आवाजाही के लिए, और तकरीबन 2 बजे तक ये एयर शो जारी रहेगा। भारतीय वायुसेना की ये रिहर्सल जारी रहेगी। ये है तैयारी भारतीय वायुसेना की, और लगातार इस पूरी रिहर्सल में अगर देखें तो सुरक्षा व्यवस्था जो जमीन पे चाक चौबंद की गई है, बाकायदा ड्रोन के द्वारा नजर रखी जा रही है। एक ड्रोन हवाई पट्टी के जस्ट ऊपर तस्वीरें दे रहा है। ड्रोन के द्वारा किस तरीके से सुरक्षाकर्मी, एक बार फिर से हम दिखाएंगे सीधी तस्वीरें हमारे घर में बैठे दर्शकों के लिए। भारतीय वायुसेना की ताकत, ये हवाई पट्टी को छूता हुआ ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल ये वो दृश्य हैं जो हमेशा के लिए यादगार पल हैं। हमारा घर बैठा दर्शक देख रहा है भारतीय वायुसेना की ताकत, देश की ताकत, किस तरीके से कभी भी विशेष मौक़ों पे, जंग की स्थितियों में ऐसी ही हवाई पट्टियों का सहारा लिया जाता है। भारतीय वायुसेना भी उन चंद देशों में शुमार हो गई है। दुनिया के कई देश, भारतीय वायुसेना दुनिया की 3री सबसे बड़ी वायुसेना है। वायुसेना की ताकत को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसकी ताकत में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। यही लम्हे लगातार ऐतिहासिक क्षण है भारतीय वायुसेना के लिए। दिन ब दिन हमारी सेना पूरी दुनिया में अपना परचम लहराते हुए और देशवासियों के दिलों में राज करती है भारतीय वायुसेना। अद्भुत नज़ारे, अद्भुत क्षण है। आप सीधा देख रहे हैं तस्वीरें। Second formation of three Mirage 2000 aircraft is called crossroads from 7 corners Indian Air Force. They are known as battle axes. The squadron was formed in फिर 3 मिराज आएंगे अभी, इसके बाद में 3 मिराज आएंगे अभी। इसके बाद अब 3 मिराज आएंगे यहाँ इस हवाई पट्टी पर। 3 मिराज कुछ ही देर बाद यहाँ पे मिराज इस पट्टी को छूते हुए निकलेंगे। मिराज वायुसेना के विमान जिनका काफी इतिहास रहा है, दुश्मन के दांत खट्टे कर देने वाले। और 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट बाद उतरेंगे। अभी 10 मिनट के बाद होगा नेक्स्ट इवेंट जो है, नेक्स्ट उतरने वाले 10 मिनट के बाद मिराज 10 मिनट बाद मिराज यहाँ पे आएंगे। Right, Vikas, you're telling us that Mirage 2000 is going to be participating in the exercise next. Give us some update as to what are the jets and planes that have already taken part in the exercise so far. We saw the Hercules, of course, landing and taking off a short while ago. 45 was state record in 1971 was remarkable contribution in castle conflict, etc. I got a few examples. The crossbow formation is being led by Wing Commander Maheshwar Singh Sangwan. Wing Commander Sangwan is a captain qualified flight instructor with over 2,000 hours of total flight experience. And we're getting those live visuals from Lucknow-Agra expressway, where is a scintillating, spectacular display by the Indian Air Force of touch-and-go exercise of various aircrafts and fighter jets. And our correspondent Vikas is present at the venue. Vikas, give us an update about the aircrafts that have already participated in the exercise so far and what's coming up next. Apart from being fully operational on Mirage 3000, he is also qualified on MiG-21 and newly acquired the latest aircraft. The crossbow tree on the right echelon will be Wing Commander. And as many as 17 aircrafts of the Indian Air Force, including AN-32 transport, Mirage 2000, which will of course be landing in a short while, as our correspondent informed. Sukhoi 30 will be touching down the Lucknow-Agra expressway. It is for the first time, in fact, that any transport aircraft will land and then take off. It's a very delicate touch-and-go exercise that is taking place. We are again connecting with our correspondent Vikas. Vikas, give us the fresh updates. What is coming up next, and which are the jets that have already participated in the exercise so far? अब कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पे मिराज 2000 एक करके 3 विमान फिर से उतरेंगे यहाँ पे। अब लोगों को उस क्षण का इंतजार है
उस पल का इंतजार है। एक बार फिर से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान यहाँ पे हवाई पट्टी पे उतारे जाएंगे। और हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से आम लोगों में, आम भारतीय में भारतीय वायुसेना के प्रति जो प्रेम है, जो आकर्षण है, वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। और ये हम देख सकते हैं इस हवाई पट्टी के जो अगल बगल आम लोगों की भीड़ खड़ी है, काफी संख्या में लोग आए हैं। और लोगों को इतना उत्साह देखने के लिए कि धूप में बिना किसी छाए के वो लोग खड़े होकर, तीरों पे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि कब एक एक कर भारतीय वायुसेना के यहाँ विमान उतरेंगे और कब उस अलौकिक नजारे को वो अपने अंदर समाहित अपने स्वयं महसूस करेंगे। और अद्भुत क्षण है यहाँ के लोगों के लिए। और एक एक करके जिस तरीके से भारतीय वायुसेना की ताकत आम आदमी जिस गर्व करता है, हर देशवासी का रक्षक है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना दुनिया में बहुत मजबूत है, चौथे नंबर की सबसे मजबूत वायुसेना है। इस बार भारतीय वायुसेना ने नए नए मुकाम हासिल किए हैं। Right, because you're telling us about all the people who've come to see and witness this spectacular exercise. I can also hear in the background a lot of patriotic songs being played. Give us again the picture of the mood that is there, where citizens are watching the Indian Air Force taking this exercise very close to them. And I think the 3 Mirage 2000 that were being spoken of just passed over in the sky. They will also be participating in the touch and down exercise. Vikas, give us a picture of what is going on there. And those live visuals coming in from Lucknow-Agra Expressway. यहाँ पे गए, हमारे स्तर के ऊपर से निकल गए 3 विमान एक साथ, जो भी एक एक कर कुछ ही देर पहले इस हवाई पट्टी पे उतरे थे। तीनों यहाँ से आसमान से गुजर गए हैं। और यहाँ पे शोर कितना था तो शायद काफी ज्यादा है, लोगों में उत्साह है और शोर है, लाउड स्पीकर लगे हैं एक तरफ, तो दूसरी ओर आम लोग भी खड़े हुए हैं। अद्भुत दृश्य, अलौकिक नजारा है। इस नजारे को देखने के लिए लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद आने वाले क्षणों में भारतीय वायुसेना के अगले विमान यहाँ पे उतरेंगे और उस क्षण को देखने के लिए उस पल का इंतजार कर रहे हैं सभी लोग, कब किस तरीके से भारतीय वायुसेना के विमान यहाँ उतर रहे हैं, एक एक करके इस हवाई पट्टी को छू के जा रहे हैं। Right, Vikas, Vikas, if you've been interacting with the officials of the Indian Air Force, for a lay person to understand, tell us about the challenge that is involved in landing such advanced jets on a road which is usually meant for cars and civilian vehicles. What is the challenge that is involved in landing such advanced aircrafts onto such stretch of roads? We're trying to connect to our correspondent Vikas, who is present at the venue, which is witnessing a historic moment. As many as 17 aircrafts of the Indian Air Force, including AN-32 transport, Mirage 2000, 3 of them just crossed the sky a few moments ago. Sukhoi 30 are the advanced jets that are expected next. They're making a touchdown on the Lucknow-Agra Expressway. And as I was sharing earlier, that it is in fact for the first time that any transport aircraft will land and take off. The aircraft touchdown exercise is being conducted at the Lucknow-Agra Expressway. The location is near Bangar Mau in the neighboring Unnao district. The AN-32, the transport vehicle which are often used for humanitarian assistance, are also being participating in this touch and down exercise. We know the role played by Indian Air Force both at wartime and peacetime, and another of the fighter jets. And thundering sound of the Indian Air Force jet absolutely leaving the people spellbound. Our colleague was telling us, who's present at the venue, a lot of people, a lot of locals have also come to witness such a unique exercise firsthand. And on the both sides of the highway, in fact, people have lined up, and there are patriotic songs being played in the background, perhaps their own way of honoring Indian Air Force, which is today engaging in such a special exercise.
Now, the Indian Air Force has about 53 airfields across the country, and this exercise, in fact, takes it to the next level. Their ability to land on a civilian highway is something of a unique achievement. Very few countries have been able to achieve that so far. And this exercise is going to enable and empower the Indian Air Force in the coming days to be able to undertake emergency landing and takeoff from a civilian highway instead of a traditional airstrip. And countries who are known to have emergency airstrips on highways, in fact, include advanced countries like China, Germany, Sweden, also Singapore. Another jet about to touch and go. That's the unique nature of the exercise. A lot of jets, they're not conventionally landing at the point, but they're just coming very close to the runway, makeshift runway, because of course it is the national highway and expressway, in fact, and taking off without formally landing on the expressway. And we're again connected to our correspondent Vikas. Vikas, tell us about, in fact, we were talking about a lot of enthusiasm among the onlookers. Give us a scene of what is going on there and what are the aircrafts which are coming up next. जी बिल्कुल, अभी आपने देखा मिराज विमान किस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद कुछ आएंगे, उस सुखोई के बाद जगुआर विमान आएंगे। अब इंतजार है लोगों को। अभी तक देखा वो ताकत भारतीय वायुसेना की हवा का सीना चीरते हुए। आपको बता दें कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ध्वनि से इसकी स्पीड होती है कि विमान पहले गुजर जाता है, आवाज बाद में आती है। तो बिल्कुल अद्भुत क्षण है लोगों के लिए। तो बिल्कुल ये अद्भुत, ऐतिहासिक, अलौकिक, जिसका कभी वो सोचा करते थे, सुना करते थे, वो आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ इस मौके पर तो व्यवस्था की गई है पूरी तरह से। चारों साउंड लाउड स्पीकर में देशभक्ति के गीत, देश प्रेम के गीत, देश प्रेम से भरा ये पूरा रियल नजारा, समारोह पूरा सराबोर है भक्ति में। आस-पास खड़े लोग इस पट्टी से हो, वीआईपी गैलरी से हो, गेस्ट से हो, दूसरी तरफ देखें आम नागरिक, आम ग्रामवासी के लोग इकट्ठा हुए। फिर से आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। विकास, अगर आप हमें थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी हमें दे पाएं फॉर अ ले पर्सन टू अंडरस्टैंड, क्या चैलेंज और रिस्क इन्वॉल्व है? ये जो इंडियन एयरफोर्स की आज एक्सरसाइज है, हम देख रहे हैं कि जेट्स बहुत ही करीब आ रहे हैं रनवे के, जो एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और टच एंड गो एक्सरसाइज के अंतर्गत वो इमीडिएटली टेक ऑफ भी कर रहे हैं। तो एक सिविलियन जो हाईवे है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे ऐसा एक्सरसाइज करना कितना मुश्किल होता है और क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व है इसमें? भारतीय वायुसेना के लिए ऐसे रिहर्सल विशेष परिस्थिति में काम आते हैं। ऐसी हवाई पट्टियों को वो पूर्ण समय पर इस्तेमाल करता है, क्योंकि जब कभी जंग की परिस्थितियां आती हैं तो दुश्मन सबसे पहले टारगेट हवाई पट्टियों पे ही करता है। तो ऐसे में उसको ऐसी हवाई पट्टियों की जरूरत होती है जिसपे वो अपनी प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ कर सके। और ऐसे में ऐसी हवाई पट्टियां काम आती हैं। ऐसी हवाई पट्टियां तैयार हुए थे, दुनिया भर के देश ऐसी हवाई पट्टियों भारतीय वायुसेना की तैयारी में है। और अभी आपने देखा अद्भुत क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है। ऐसी हवाई पट्टियों का इस्तेमाल तभी होता है और ऐसी इनको इस स्तर से बनाया जाता है, इस तरीके से तैयार किया जाता है कि भारतीय वायुसेना आम जगह हर जगह नहीं उतर सकते हैं। चुनिंदा हवाई पट्टियों पे उतारे जा सकते हैं और इस तरीके के रन में भारतीय वायुसेना की ताकत में और चार चांद लगा देते हैं। ऐसे में चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। वो एयरफोर्स यहाँ पे तैयारी कर रही थी, बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। चारों तरफ से बैरिकेडिंग की जाती है कि कोई जा न सके, लगातार इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। जी विकास, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक
स्टेट ऑफ द आर्ट जो फाइटर जेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो टच एंड गो एक्सरसाइज कर रहे हैं। लैंड करते करते इमीडिएटली वो टेक ऑफ कर रहे हैं। थोड़ा अगर आप हमें बता पाएं कितने ऑफिशियल्स इंडियन एयरफोर्स के एंगेज्ड हैं इस एक्सरसाइज में जो आज हम देख रहे हैं लाइव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। बिल्कुल, आगरा एक्सप्रेसवे पे 15 लड़ाकू विमान इस हवाई पट्टी को छू के जाएंगे और 2 ट्रांसपोर्ट विमान। अभी सबसे पहले Mi-30 आया था जिसमें गरुड़ कमांडोज उतरे थे। वो एक ऐसा भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट विमान है जिसमें सैकड़ों टैंक एक साथ ले जाए जा सकते हैं, साजो सामान सेना का सैनिक उतारे जा सकते हैं। और भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है अपने विमान कई मौकों पर बहादुरी का बटन लहरा चुके हैं, दुश्मन के दांत खट्टे कर चुके हैं। इन विमानों से मिसाइल भी अलग अलग फॉर्मेशन में प्रयोग की जा सकती है। तो अपने आप ताकतवर, दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों में से एक ये विमान यहाँ पे उतर रहे हैं और बहुत ही खास है। तो हम 15 कुल मिलाकर लड़ाकू विमान यहाँ पे इस हवाई पट्टी को छू के जाएंगे एक एक करके। उसके बाद फिर से Mi-30 आएगा और यहाँ पे जो गरुड़ कमांडोज उतारे हैं उनको लेके फिर वो फिर से रवाना हो जाएगा अपने गंतव्य की ओर। जी विकास, अभी कुछ देर पहले C-130 हर्क्यूलिस जो विमान है जो कि इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स इन द वर्ल्ड, यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स यूजुअली, इतने बड़े एयरक्राफ्ट को लैंड करना एक एक्सप्रेस वे पे कितना बड़ा चैलेंज था, किस तरीके से वो अचीव कर पाए, वो खासकर एक यूनिक मोमेंट था इंडियन एयरफोर्स के लिए। बिल्कुल सही बात है। भारतीय वायुसेना के लिए ये एक्सरसाइज इस तरीके की पट्टियां तैयार की जाती हैं और इस तैयारी को, इस रिहर्सल को 5 दिनों से लगातार किया जा रहा था। भारतीय वायुसेना ऐसी तैयारियों की चुनौतियों के लिए हर समय सक्षम है और ऐसे ऐतिहासिक क्षण यहाँ के तौर से उत्तर प्रदेश के लिए बहुत मायने रखते हैं। ऐसे ऐतिहासिक क्षण और इस तरीके के रिहर्सल को देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह रहता है। और अगर बात करें आज की, तो आज इन 15 विमानों को देखने के लिए टोटल 17 विमान यहाँ पे आएंगे। इन विमानों को देखने के लिए लोगों में काफी ज्यादा उत्साह था। ऐसी तैयारियां, ऐसे दृश्य, अद्भुत नजारों को देखना अपने आप में ऐतिहासिक लम्हा होता है। जी विकास, हम यहाँ पे टच एंड गो टचडाउन एक्सरसाइज देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का। आप अगर हमें बता पाएं ये जो कई जो प्लेन्स लैंड कर रही हैं, इनका टेक ऑफ किस जगह से हो रहा है? क्या ये एक्सप्रेस वे से ही टेक ऑफ कर रही हैं या पास की एयर स्ट्रिप से टेक ऑफ करके यहाँ पे एक्सरसाइज में एंगेज हो रही हैं? ये लड़ाकू विमान यहाँ पे रिहर्सल होती है लोगों पे यहाँ पे लैंडिंग यहाँ से टेक ऑफ किया जा सके। ऐसी हवाई पट्टियां तैयार की जाती हैं सेना के लिए। भारतीय विभिन्न आपदाओं की भी यहाँ पे नियरेस्ट स्थानों के लिए किस तरीके से साजो सामान पहुंचाया जा सके। भारी मात्रा में ट्रांसपोर्ट विमान जो काफी बड़ा होता है, अपने आप ज्यादा एक साथ टैंक तक ले जाए जा सकते हैं। तो वहीं राहत सामग्री भी इनसे बड़े बड़े वाहन अपने आप में भी जी विकास, वॉर टाइम में, युद्ध के समय में तो हम जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के कारनामे, लेकिन विकास अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, जो पीस टाइम नीड्स होती हैं किसी डिफेंस फोर्स की, हम जानते हैं कि अभी जो बाढ़ के हालात थे कुछ महीने पहले, उसमें इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स हैं, जो प्लेन हैं, उन्होंने काफ़ी बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस में मदद करी। तो उस लिहाज से ऐसे जब एक्सप्रेस वे पे कोई लैंड करता है जो कि नॉन ट्रेडिशनल एक एयर स्ट्रिप है, कितना बड़ा बूस्ट मिल रहा है इंडियन एयरफोर्स को इस एक्सरसाइज को करने के बाद, खासकर जब उसको बाढ़ या ऐसे कोई नेचुरल कैलामिटी में रेस्क्यू रिलीफ पहुंचाना होता है? And we're getting those live visuals from Lucknow-Agra expressway, where a spectacular exercise by the Indian Air Force is being conducted.
as many as 17 aircrafts, different aircrafts, including AN-32 transport, fighter jets like Mirage 2000, advanced aircrafts like Sukhoi, and these aircrafts also travel at the speed, more than the speed of sound, in fact, and they're measured in Mach. They're in fact touching down at the Lucknow-Agra expressway. The event is unique also because a transport aircraft, heavy transport aircrafts like a C-130 Hercules, also a short while ago practiced in this land and then takeoff exercise. This expressway has been closed for commuters for a few days as Indian Air Force plans to conduct a touchdown exercise that is happening today. And this for the first time, a transport aircraft which are known by their weight and size and require a very elaborate and advanced airstrip to land are also landing here and taking off from the highway. In fact, the Indian Air Force, the vision that it has, it wants new public roads to be designed in such a manner to be able to serve as runways, both in wartime and peacetime, to be able to facilitate their services. And we are again trying to connect to our correspondent Vikas. Vikas, what updates, what is the next jet plane that we're likely to see in the skies now? अब कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पे सुखोई विमान उतरेंगे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, आसमान का सीना चीरते हुए किस तरीके से जा रहे हैं। आसमान पर सुखोई 13 लहराता हुआ और कितने अद्भुत कला, कितना अब वायुसेना का ये लड़ाकू विमान अपने आप में अद्भुत कला दिखाता हुआ। Right, Vikas. In fact, we can see Sukhoi 30, the spectacular. That's right, the spectacular plane in the range that the Indian Air Force has. We'll be watching those spectacular visuals on our screens. Right, and the prowess of Indian Air Force on display. और इतना विमान में शोर होता है, इसकी स्पीड आवाज से भी ज्यादा इसकी स्पीड होती है कि ये विमान गुजर जाते हैं, उसके बाद आवाज आती है, इतनी आवाज आती है कि आसपास सब वातावरण गुंजायमान हो जाता है इसकी आवाज से। यही है भारतीय वायुसेना की ताकत जो आज आगरा एक्सप्रेसवे पर दिखाई दे रही है, जिसको देखने के लिए यहाँ के हरी जन सैलाब भी उमड़ा है। Right, Vikas, if you can hear me, we're watching those absolutely spectacular visuals of the exercise by the Indian Air Force. Now, usually such exercise by the Air Force is visible during, say, Republic Day parade. Tell us about the people who've gathered here. I believe most of them are locals. How were they thrilled to watch these very advanced aircrafts landing and taking off in front of them? Gordon has come a long way since 1940, and today has the proud privilege of flying the mighty Sukhoi. This person are the finest fighter pilots of the world. Their motto, Pure Raksha, they are ever ready for safeguarding the Indian skies. And a short while ago, the advanced aircraft Sukhoi 30 rocked through the skies above the Indian Air Force exercise that is taking place at the Lucknow-Agra expressway, a very unique exercise of its kind, which in long term is a great way to empower the Air Force, because not only will it be able to land and take off from conventional airstrips that it has, but also gaining expertise of landing on expressways and highways like it is doing today, Lucknow-Agra expressway. And this, once this expertise is reached, it can play a great role both in wartime and peacetime. We know a couple of months ago how the floods caused devastation in various parts of the country, and Indian Air Force had played a very important role in providing rescue and relief efforts. And it is training like this to be able to land and work from unconventional contexts, which empowers and makes the Indian Air Force one of the best in the world. And in fact, very few countries have the expertise of landing their fighter jets on emergency airstrips. Singapore, Sweden,
Germany, in our neighborhood, China, again, has extensive ability like that. And now India also comes in that category. Remember, last year in December, also Indian Air Force had engaged in a similar exercise. And what makes the day unique today is that the very heavy and wide transport aircrafts like AN-32, C-130 Hercules are also participating in this exercise today. Those live visuals coming to you from Lucknow-Agra expressway near Unnao. And we again go across to our correspondent Vikas. Vikas, give us a picture of what it is to witness an aircraft that flies at Mach 2, Mach 3. I mean, more than the speed of sound. It is one thing to watch it on television sets as we're doing, but you tell us, being present there, what is the view like? अभी यहाँ पे अब कुछ ही देर बाद सुखोई 30 विमान एक बार फिर से उतरेंगे इस हवाई पट्टी पे, जिसको तैयार किया गया है आगरा एक्सप्रेसवे के लिए। ये अद्भुत क्षण होगा। इसके बाद जगुआ उतारे जाएंगे, एक एक कर भारतीय वायुसेना के विमान यहाँ पे उतर रहे हैं। इससे पहले जो विमान उतरे हैं, लोगों का वो दृश्य देखा, अद्भुत क्षण था, अद्भुत लम्हा था। इस लम्हे को देखने के लिए लंबा इंतजार, लंबे समय से लोग यहाँ पे खड़े हुए थे और इस क्षण में काफी ज्यादा उत्साह है लोगों में। पूरा वातावरण, पूरा ये क्षेत्र जहाँ पे समारोह हो रहा है, समारोह परिसर देशभक्ति के देख सकते हैं इस तरीके से। पहल का उठा दिया भारतीय सेना से, भारतीय वायुसेना से किस तरीके से दुश्मन घबराता है, यही वो विमान है जिन पर भारतीय वायुसेना आज आगरा एक्सप्रेसवे पे जिनको लैंड करा रही है। इसी वायुसेना पर भारतीय प्रशासकीय हद को गर्व है, जिसको आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं एक एक कहकर। अभी कुछ ही क्षणों में फिर से एक विमान आता हुआ सामने से सुखोई 30 की तस्वीरें आगरा एक्सप्रेस कुछ ही क्षणों में छूटा हुआ निकल जाएगा। अद्भुत करीब आता हुआ, हवा का सीना चीरते हुए सीधी तस्वीरें अलौकिक। And on the screens you can see the very advanced Sukhoi 30 aircrafts participating in the land. रामायण की तैयारी है भारतीय वायुसेना की, भारतीय वायुसेना की तैयारी पूरी दुनिया देख रही है, देशवासी देख रहे हैं। हर भारतीय तो गौरवान्वित ही है। देश से बाहर पूरी दुनिया में भी भारतीय वायुसेना की ताकत को देखा जा रहा है कि किस तरीके से मौका पड़ने पर भारतीय वायुसेना इमरजेंसी लैंडिंग एक्सप्रेसवे पे भी करवा सकता है। साथ ही जंग के विशेष मौके तो होते ही होते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियां, किसी आपदा के समय, किसी विशेष परिस्थिति में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें भारतीय वायुसेना ने बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की है, लोगों की जिंदगियां बचाई है। और इसी मौकों पर भारतीय वायुसेना के विमान यहाँ पे मालवाहक विमान तो लैंड कर ही सकते हैं। किसी जंग में दुश्मन के साथ घटते कर देने वाले, दुश्मन के खेमे में तहलका मचा देने वाले ये भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान यहाँ पर भी उतर सकते हैं। Right, Vikas, let me just again inform our viewers that. Right, Vikas, let me inform our viewers that they're getting this live update, those visuals from Lucknow-Agra expressway, and the aircraft touchdown exercise is taking place on this stretch of road, the expressway near Bangarmau in Unnao district. The location is about 65 kilometers from Uttar Pradesh capital Lucknow. And the traffic, of course, has been restricted in the area for the Indian Air Force to be able to participate in this exercise. And what is unique is the touchdown exercises have been done in the past as well. Last year in December also fighter jets had landed on this stretch of land. What is unique today is that 35,000 kg heavy C-130J Super Hercules aircraft, which are aircrafts which require a very state-of-the-art airstrip to be able to land and take off. They participated in this exercise today.
And a short while ago, we saw the Hercules aircraft coming to a full stop on the landing, and other fighter jets, including the top-of-the-line Sukhoi 30, Mirage, also participated in the exercise. However, they did not really land and stop. They participated in something called a touchdown exercise, where you come very close to the landing strip and you take off immediately. Spectacular view for the people who've come to witness such a state-of-the-art exercise. And there is a great strategic importance of an exercise like this, especially during wartime, if we know that the enemy often attacks the conventional air bases, airstrips, and in such a situation, it is the ability, it is the talent of using an expressway or civilian highway to take off and land is what distinguishes a state-of-the-art Air Force, which Indian Air Force has the capability of now, and we see its repeated demonstration of the same. And these are, remember, jets which travel at a speed more than the speed of sound. And for such jets to be able to focus and land on this strip of land, which is very different from the conventional air bases, also talks about the expertise of the pilots of the Indian Air Force and all the officials, of course, who are engaged in this exercise. And in the visuals, you can see so many people who lining up on both sides of the expressway to catch the glimpse of this unique exercise firsthand. A short while ago, we could also hear a lot of patriotic songs. So we can see the national flag fluttering at one corner. Truly, it is a moment of pride for all the people who've come here to witness this unique exercise. And we see a lot of young people, a boy holding a national flag, a moment of pride, which is made possible by the Indian Air Force and making this very unique and challenging, remember, exercise a reality that is taking place at Lucknow-Agra Expressway. This whole exercise is taking place about 65 kilometers from the capital of Uttar Pradesh, Lucknow. Unnao is the district where this stretch of road falls in. And a unique part about the exercise since morning has been the landing of the very powerful and very heavy and large-sized C-130J Hercules aircraft, which is usually used for transporting equipment and relief work. Yes, Vikas, we'll connect to you now. एक बार फिर से सुखोई आगरा एक्सप्रेस हवाई पट्टी पर करीब आता हुआ छूता हुआ फिर से आप देख सकते हैं कि तस्वीरें भारतीय वायुसेना की ताकत हवाई पट्टी पे छूता हुआ ये किस तरीके से प्रदर्शन भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन सुखोई भारतीय वायुसेना की शान हवाई पट्टी को छूता हुआ निकल गया आसमान की ओर। इस तरीके से अद्भुत है। बिल्कुल ये बहुत ही यादगार लम्हे होते हैं एक आम आदमी के लिए, आम इंसान के लिए। भारतीय वायुसेना की ये विमान जिनको देखने का लम्हा कभी कभी आता है कि ये क्षण होते हैं जब हर आम आदमी, हर देशवासी उसे टीवी के माध्यम से देख रहा है और उनके लिए तो ये दृश्य अद्भुत अलौकिक है। इस दृश्य को काफी ज्यादा जो उत्साह था लोगों में इतना ज्यादा उत्साह है कि लोग अपने मोबाइल के लगातार अपनी तस्वीरें विमानों के साथ खिंचवाने के लिए लगे हुए हैं। फिर से तस्वीरें भारतीय वायुसेना का विमान, वो विमान दुश्मन के खेमों में खलबली, दुश्मन जिनके नाम से हर्राते हैं भारतीय वायुसेना की वो ताकत, इससे पूरी दुनिया मस्ती है, पूरी दुनिया जानती है यही है भारतीय वायुसेना की ताकत, जो हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर मौके, हर विषम परिस्थिति में तैयार है हर समय देश की रक्षा, देश की सुरक्षा
और देश की सहायता के लिए हर समय तैयार रहती है भारतीय वायुसेना। और इसी दृश्य को देख रहे हैं, इसी दृश्य को देखने के लिए वो भी देख रहा है और खुद ब खुद महसूस करना, ये महसूस करना खुद में गौरवान्वित होने के समान है। भारतीय वायुसेना पे तो हर व्यक्ति को गर्व है ही है, भारतीय सेना पे Right, Vikas, let us also inform our viewers about this particular aircraft, which is the strength of the Indian Air Force, Sukhoi 30 MKI, and it was in the year 2002 that it was inducted in the Indian Air Force. And this aircraft, the jet aircraft that travels at a speed higher than the speed of sound, has been developed by Russia's Sukhoi company and also built under collaboration with India's Hindustan Aeronautics Limited for the Indian Air Force. It is an all-weather, long-range fighter, and the Indian fleet has about over 200 such Sukhoi 30 aircrafts. And by 2020, more modifications are expected in this Sukhoi 30 aircraft, and it is expected to be the flag bearer of the state-of-the-art technology used by the Indian Air Force. And we see how these aircrafts are also participating in the exercise today. Again, glimpses of people who've come since quite early today to witness this spectacular air exercise. And the Sukhoi 30 is also distinguishable from a distance for its unique design, the two-tailed design that sets it apart from other jet aircrafts. And as of 2017, the Indian Air Force has about 230 of Sukhoi 30 jets in service, and it is expected to form the backbone of the Indian Force fighter fleet by the year 2020 and beyond. The Sukhoi 30 is a very advanced, it's a twin fin, as I was saying, that the way to distinguish Sukhoi flying in the air is the twin fin, the two-tailed aircraft. And what makes it advanced is also the use of titanium and high-strength aluminum alloys that gives the plane its agility, while it is serving the nation both at wartime and peacetime. And that's what makes the Sukhoi 30 very unique. And a short while ago, we saw Sukhoi 30s landing at the airstrip. And the Agra-Lucknow expressway has converted into an airstrip for this unique exercise to take place today. And a short while ago, we also saw the very impressive Super Hercules aircraft. It's a transport aircraft, and what makes the day unique is also that such a big and heavy transport aircraft that weighs in tons has also participated in the exercise today. And what is unique about Super Hercules is that at one go, apart from equipments, it can also carry up to 200 commandos. So it needs no description as to how important it can become at strategic moments in both wartime and peacetime to be able to carry so many numbers of commandos and equipments. Each of the plane cost nearly 1,000 crore, 900 crore, and state-of-the aircraft also made a record about a year ago by landing at a great altitude in India. And the Super Hercules aircraft also participated in the exercise today a short while ago. In fact, one of the first aircrafts to have landed on the Lucknow-Agra expressway, which was followed, of course, by very high-speed, Mach-speed aircrafts such as Mirage, MiG and Sukhoi, which earlier rocked through the skies, and also after that participated in the touchdown exercise, in which they did not really land and stop, but they came very close to the airstrip, which is also very challenging considering the speed that these aircrafts maneuver in, talking about the expertise and the talent of the pilots who are managing the aircraft, and of course the crew that is guiding them. And this exercise taking place not at an airways, but on a stretch of road which usually sees civilian traffic, trucks, cars, bikes. But the people here who've gathered in the Unnao district at the Lucknow-Agra expressway are witnessing
perhaps a once-in-a-lifetime experience, where fighter jets are participating in this very challenging exercise, which also puts India in the league of very advanced countries who have not just the ability to have emergency airstrips, but also have pilots who are trained to use such airstrips. Countries like China, Germany, Sweden, Singapore are known to have developed such airstrips and also imparted the talent among their technicians and pilots to be able to use such airstrips in times of need. And today we witness how India also very proudly has been brought to the same ranks by the very able Indian Air Force. In a short while from now, we'll see another set of fighter jets participating in the aircraft touchdown exercise. For those of us who've just joined us, those live visuals are coming from Lucknow-Agra Expressway, Unnao district. This whole exercise is taking place about 65 kilometers from the capital of Uttar Pradesh, Lucknow. And today this expressway is not witnessing any ordinary traffic. What it is witnessing is a very challenging, also risky exercise that is undertaken by the Indian Air Force, where extremely heavy aircraft such as the transport C-130J Hercules aircraft, and also aircraft that move at a very high speed such as Sukhoi, Mirage, are all coming together to participate in another set of aircrafts rocking through the sky. And since these aircrafts fly at a Mach speed, which is more than the speed of sound, we also witness this phenomena of aircrafts going past the screen, and then the sound, the thundering sound, follows it. And the viewers of DD News, also the viewers who are witnessing this event firsthand at the Lucknow-Agra Expressway, also saw an unbelievable scene a short while ago, where a 35,000 kg C-130 Super Hercules aircraft, which is known for carrying heavy supplies and also can carry a significant number of soldiers all at one go, landed on this expressway a short while ago. And it is a particular challenge to be able to maneuver such a heavy aircraft on a strip of land which is usually meant for civilian traffic. And the echo of the thunder of the fighter jets still reverberating, and people have been left spellbound who are witnessing the event firsthand at the Lucknow-Agra Expressway, a unique event. One usually gets to see such spectacular display of the prowess of the Indian Air Force during Republic Day parades, but it is a unique event where the stretch of road that usually witnesses trucks, bikes and motor vehicles are witnessing state-of-the-art aircrafts that travel at more than the speed of sound, touching and going from the Lucknow-Agra Expressway. And for security purpose, a few days ago, the area was cleared and the traffic was stopped. The usual civilian traffic was stopped to be able to prepare for this program that we are witnessing today. And the aircrafts are both thundering through the skies and also participating in the touchdown exercise, one after the other. And we'll try and connect to our correspondent Vikas, who's present at the venue. Vikas, are you with us? Also, given the high decibel of sound that this exercise involves, it is possible that our correspondent is unable to hear us. For those of us who've just joined us, we are bringing those live visuals from the Lucknow-Agra Expressway
in Unnao, Uttar Pradesh, where this very unique and challenging exercise is taking place with the Indian Air Force and the 17 aircrafts of the leading air force of the world is practicing touchdown exercise at the Lucknow-Agra expressway. Not every day do you see such visuals of fighter jets landing and taking off from an expressway. And this exercise today is not just visually spectacular, but it has a very significant strategic value for the future as well.